Hello students, in this video we are going to study about relation between electric current, that is I, and drift velocity, that is Vd vector. In previous video we have studied that drift velocity Vd is the average velocity gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction of externally applied electric field. मीन्स अगर हम किसी कंडक्टर पे एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई अप्लाई करते हैं देन उस फील्ड की वजह से उस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ वेलोसिटी अटेन करते हैं जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है. दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वी डिनोट इट बाय वी डी वेक्टर. So now we want to derive a relation between electric current I, means that electric current which is flowing through the conductor, and drift velocity, means that average velocity attained by the free electrons while moving throughout the conductor in the direction opposite to the electric field. means electrons जो ये velocity attain करेंगे उसकी direction opposite to electric field होगी. For this we consider a conductor having a potential difference V applied across its the length of the conductor is L and the conductor has a uniform cross section capital A. So what we have a conductor, suppose this is a conductor of uniform cross sectional area A and length small l, and a potential V is applied across the ends of the conductor. This is the battery which is connected to the conductor. Now due to this battery, the electrons inside the conductor, or we can say the free electrons inside the conductor will move towards the positive end of the battery, Because of this battery, an electric field capital E is set up inside the conductor and its direction will be from this positive end to negative end of the conductor. So we can say that this electric field E that is set up because of the battery of voltage V, we can say that this electric field capital E is equal to V upon L. मीन्स इस बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल इस कंडक्टर के अक्रॉस सेटअप हुआ दैट इज V, द पोटेंशियल डिफरेंस इज V across the length L, and electric field is this potential difference per unit length, means V upon L. Let it be equation number 1. Now under the influence of electric field E सेटअप होने के बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड these free electrons begin to move in a direction opposite to E, that is from negative to positive. इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स कितना होगा हमें पता है, चार्ज कैरियर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू दी जाती है बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई. तो ये जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू होगी माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है माइनस ई. और अगर आप डायग्राम से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव एंड, while electric field setup होता है from positive terminal to negative terminal. So both are in opposite directions. That means the direction of E vector or electric field will be opposite to direction of this velocity
जो इलेक्ट्रॉन अटेन करेंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी कॉल दिस वेलोसिटी एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ vd, that is vd vector, that is drift velocity. So क्या किया है हमने? We have considered a conductor and connected it to a battery so that a potential difference of capital V set up across it. Because of this potential difference across the length L, an electric field E is equal to V upon L set up across the conductor, and because of this electric field, these electrons experience a force is equal to QE or minus EE, whose direction is from negative terminal to positive terminal of the battery, or we can say that whose direction is opposite to the direction of electric field. Now mathematically, suppose we consider that the number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume inside this conductor, number of electrons per unit volume inside this conductor, और इसी को हम बोलते हैं electron density. Suppose this is equal to small n, means per unit volume या per unit cube में we have n number of electrons present inside the conductor. Now हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, that we know. Charge on an electron is equal to small e, right? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज n, तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज इस लेंथ l के कंडक्टर के अंदर कितना होगा. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब टोटल इस लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L of the conductor is equal to, हाँ जी, कितना हुआ? Total number of electrons in length L is equal to electron density, means number of electrons per unit volume, into volume of the conductor. Now conductor is in the form of cylindrical shape, so उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है दैट एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. सो ये हो जाएगा n इंटू a इंटू एल, और NaL. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर. सो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल charge in length L of the conductor is equal to total number of electrons into एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मीन्स E into NaL, और this will be Q is equal to ENAL, right? Equation number 2. Let it be equation number 2. Now all the electrons which enter the conductor, like यहाँ से देखेंगे from the right end, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में एंटर हो रहे हैं, that all will pass through the conductor from the left end, और इतना करने में they are taking some time t, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है? t, और ये डिस्टेंस कितना है? l. सो व्हाट वी वांट टू से दैट कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में एंटर होगा और जब इस कंडक्टर से एग्जिट होगा तो उसने डिस्टेंस l ट्रैवल किया होगा इन टाइम t विथ सम वेलोसिटी vd, दैट इज इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि वो उसी वेलोसिटी से इसके अंदर मोशन कर रहा है. सो दैट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस
अपॉन वेलोसिटी. कौन सा टाइम है ये? टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन in between entering and exit, entering and exit, getting exit from the conductor of length L, right? So this distance is L, it means T is equal to L upon Vd, equation number 3. But we know that the current flowing through the conductor, because charges are flowing, so there must be a flow of current, and current flowing through a conductor is equal to the rate of flow of charge, or for steady current we put it as I is equal to Q upon T. So what we know is current I is equal to Q upon T. Now we have the values from equation number 2 and 3. From number 2 and number 3 we have I is equal to Q की जगह ENAL and time की जगह L upon VD, and this will be equals to ENA VD. This will be is equal to ENA VD. So let's have a quick look कि हमने इसमें क्या क्या किया है. To find the relation between electric current and drift velocity, we consider a conductor of length L and we connect it to a battery so that a potential difference of capital V set up across it. Because of this, an electric field capital E set up inside the conductor, and इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा, दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस ई. एंड इस फोर्स की वजह से इन्होंने मोशन करना स्टार्ट किया. दे अटेन अ वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी विल बी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वाइल दिस इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, एज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन वाइल नेगेटिव रिपेल इलेक्ट्रॉन. नाउ the number of electrons per unit volume or electron density is N and charge on each electron is E. So total number of electrons in length L can be given as, पूरी लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, जितना यूनिट लेंथ में है या जितना यूनिट वॉल्यूम में है, इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर. सो यूनिट वॉल्यूम का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन N आ गया, एंड उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, मीन्स कंप्लीट लेंथ L का जो कंडक्टर है उसके वॉल्यूम से, और वॉल्यूम निकल के आएगा एरिया इनटू लेंथ से, मीन्स NaL. दिस विल बी द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, एंड इनटू किया हमने इसको n से, तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L. नाउ टोटल चार्ज कितना हो गया फिर उस लेंथ में, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है और एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है, तो टोटल चार्ज हो गया मल्टीप्लाइड बाय E, मीन्स Q इज इक्वल टू ENAL. नाउ वी नो दैट अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, दैट मीन्स वहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है. सो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, बट फॉर दैट वी नीड टाइम T. सो हमने सबसे पहले T निकाला कि कंडक्टर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा. तो कंडक्टर को क्रॉस करने में डिस्टेंस चला उसकी लेंथ के जितना, मीन्स L, एंड इट्स वेलोसिटी विल बी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स ने अटेन किया बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. So current I is equal to Q upon T, and we will put the value from equation number 2 and 3. It will be I is equal to ENAL and T is equal to L upon VD. On calculating we get ENAVD. L and L will be cancelled out. So this is the relation between current and drift velocity. We can also extend this relation to find a relation between current density and drift velocity. Let's see कैसे करेंगे हम ये. To find the relation between
current density J and drift velocity Vd, what we are going to do, we are going to calculate J. So current density J is equal to होता है current upon area A. Now current is equal to, we just calculated that I is equal to ENA VD divided by A. So J is equal to हो गया ENVD. This is the relation between current density and drift velocity. In vector form, we can write it as, since current density, since current density J is a vector quantity, so we write this equation as J vector is equal to ENVD vector. This is the vector form of the relation between current density J vector and drift velocity Vd vector. We can also prove Ohm's law using this relation. Let's see. इसी रिलेशन का यूज़ करके हम ओम्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं. क्या प्रूव करने वाले हैं हम? ओम्स लॉ यूजिंग अबव रिलेशन, जो अभी हमने रिलेशंस पढ़े हैं इनका यूज़ करके हम ओम्स लॉ के रिजल्ट्स को लेके आ रहे हैं. सो व्हाट वी हैव इज़ अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट and length of the conductor is L. Its drift velocity Vd can be given as, in our previous video we have calculated the formula for drift velocity. What was it? Drift velocity Vd is equal to E tau upon m. ये फार्मूला कल हमने कैलकुलेट किया था. Vd is equal to E tau upon m. जब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते थे तो इट वाज Vd वेक्टर is equal to minus E vector tau upon m, where negative sign shows that the direction of E vector and Vd vector are opposite to each other. Means जो drift velocity electrons attain करेंगे उसकी direction E vector के opposite होगी. Here we are considering magnitudes only. So what we can write to E is Vd is equal to E, and we know that capital E is equal to V upon L. So we can write it as V upon L, since E is equal to होता है V upon L. ठीक है, यहाँ तक. तो अभी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई. नाउ इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज A and number of electrons per unit volume, or we can say electron density is n, then current through the conductor will be I is equal to ENA VD. जस्ट अभी हमने इसको प्रूव किया है कि अगर वो जो कंडक्टर हमने कंसीडर किया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, देन उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा इट विल बी I इज इक्वल टू ENA VD. सो यहाँ पर what we are going to prove is Ohm's law. अब Ohm's law क्या कहता है? that V is equal to Ri और V upon I is equal to a constant. हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? V upon I is equal to a constant. Let's do it. For this what we are going to do, from equation number let it be first, right? Let it be first. This is the equation number first and this is equation number second. From equation number first, substitute value of Vd in equation number second. फर्स्ट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम सेकेंड में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. देन वी गेट I इज इक्वल टू ENA EV tau m अपॉन m L, राइट. सॉल्व होके कितना बचेगा? I इज इक्वल टू V and it will be E square N A tau upon m L. But we want to calculate V upon I, so let's rearrange this, and on rearranging we get V upon I is equal to mL upon E square N A tau.
here at fixed temperature. Now Ohm's law has a condition that physical conditions should be same. So what we are writing, at fixed temperature, अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स किया हुआ है, at that time mass, length, number density, electronic charge means एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, and tau, that is relaxation time, tau, as well as area capital A, all these quantities will be constant. All these quantities will be constant at fixed temperature. So if all these quantities will be constant, then V upon I is equal to some constant, and let this constant be capital R. This is the required Ohm's law. So from here what we get? From here we get R is equal to, means resistance of the conductor is equal to M L upon N E square A tau. Alright, this is the resistance of the conductor. Using this value of resistance, we can also find the resistivity in these terms, because we know that the resistance R is equal to rho L upon A. So on comparing the relations, we can find the resistivity. For resistivity, what we are going to do, we know that the formula of resistance R is equal to होता है rho L upon A, and we just calculated resistance R is equal to M L upon N E square tau A. So what we are going to do, we are going to equate these two values, and we get rho L upon A is equal to M L upon N E square tau A. So answer will be rho is equal to M upon N E square tau. This is the value of resistivity in terms of electron density, that is conductor, and the second is relaxation time tau, that is the average time between two successive collisions of an electron. मीन्स कंडक्टर के साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप दो अलग अलग वायर्स लेते हो एल्युमिनियम के, एक थिन है एक थिक है, एक ज़्यादा लेंथ का है एक कम लेंथ का है, उससे उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इट गेट इफेक्टेड बाय दीज टू पैरामीटर्स, दैट इज़ small n means number of free electron per unit volume or electron density of the conductor, and the second one is the relaxation time, that means the average time between two successive collisions of an electron. We can also find a relation between current density J vector, conductivity sigma, and electric field E vector. Using above relations, we can also find relation between these three. Let's see how we can find that. We know that for an electron, Q is equal to minus E, charge on electron is minus E, its drift velocity can be given as Vd vector is equal to minus E vector tau upon M. So current density J vector is equal to, J vector कितना हो जाएगा, J vector की वैल्यू होती है n, then charge, then Vd vector. So for electron it will be n minus E and minus E vector tau upon M, or we find J vector is equal to n E square E vector tau upon M, and we write it as J vector is equal to n E square tau upon M into E vector. Okay,
but this value is equal to 1 upon rho. Here we prove it. The resistivity rho is equal to होता है m upon n e square tau, and this is its reciprocal, so it will be 1 upon rho. So j is equal to हो गया, j vector is equal to 1 upon rho e vector, and 1 upon rho, it means reciprocal of resistivity will be the conductivity. So j vector is equal to sigma e vector, where sigma is the conductivity of the conductor. This equation is also known as Ohm's law in terms of vector quantities like j vector and e vector. This also represent Ohm's law in vector quantities j vector and e vector. Okay, so what we find that rho is equal to होता है m upon n e square tau. This is the value of resistivity in terms of electron density and relaxation time, and using this we can find j vector is equal to sigma e vector, which is known as Ohm's law in vector quantities j vector and e vector. That's all for the video. We'll come soon with another video. Till then, study hard and stay safe. Thank you.